सहस्रशीर्षः पुरुषः सहस्राक्षः सहस्रपात् स भूमिकौ सर्वस्य पृथ्वात्यतिष्ठद्दशाङ्कुलम् पुरुष एवेदकौ सर्वं यद्भूतं जश्च भाव्यम् भूतामृतत्वशेषानो जतन्नेनातिरोहति एतावानस्य महिमातो जायाश्च पुरुषः पादोऽस्य विश्वा भूतानि त्रिपादस्यामृतं दिवि त्रिपादोर्ध्व उदेत् पुरुषः पादोऽस्येहा भवत् पुनः ततो विख्वं व्यक्रामत्शासनानशने अभि ततो विराड जायत विराजो अधिपुरुषः स जातो अत्यरिष्टत पश्चात् भूमिमतो पुरः तस्माद्धज्ञात् सर्वभूतः संभृतं पृखदाज्यम् पशुस्ताश्चक्रे वायव्या नारण्य ग्राम्याश्च ये तस्माद्धज्ञात् सर्वभूतरिच मया कृष्णेन निहताः सार्जुनेन रणेषु ये प्रवर्तयिष्यन्त्यसुरा स्थित्वा यदाक्षितो धर्मदेवा तदा भक्ता अहं नारायणो मुनिः जनिषे कौशले देशे भूमो हि सामगो द्विजः मुनिशापानृतां प्राप्ता नृषिंस्तात तथोद्धवम् ततो वीतसुरेभ्योऽहं सद्धर्मं स्थापयन्नज सद्धर्मं स्थापयन्नज। बोलो स्वामीनारायण भगवाननी जय, श्री हरि कृष्ण महाराजनी जय, श्री राधारमण देवनी जय, श्री लक्ष्मी नारायण देवनी जय, श्री नर नारायण देवनी जय, श्री गोपीनाथ जी महाराजनी जय, श्री मदन मोहन जी महाराजनी जय, श्री कष्टभंजन देवनी जय। अथ सप्तपञ्चाशत्तमोऽध्यायः। सूरत उवाच स्वामिनारायणाय स्वाहा। स्नात्वा स्वामी प्रदोषेऽथ राधिकाधीशपूजनम् उपचारैर्महद्भिश्च यथाविधि चकार सः स्वामिनारायणाय स्वाहा। एकादश्या जागरणं ततः कुर्वन् निजैः सह स्वामी पुनरपृच्छत्तं तज्जन्मस्थानमादितः स्वामिनारायणाय स्वाहा। कूलं च पितरो गोत्रं प्रवरान्देशिकं तथा वेदं शाखामिष्टदेवं वैराग्यं स्वजनत्यजिं स्वामिनारायणाय स्वाहा। वनवासं तपोभेदान् साङ्गयोगस्य साधनं तीर्थयात्रां तत्र तत्र तीर्थिकानां समागमं स्वामिनारायणाय स्वाहा। एतत् पृष्ठः स्वामिनोऽसौ यथावत् सर्वमादितः क्रमेण कथयामास ह्यनुभूतं यथा यथा स्वामिनारायणाय स्वाहा। सविस्तरं यद्वृत्तान्तं सश्रुत्वा प्रीतिमान् भृशं प्राहत्वम् अस्मदीयोऽसि वर्णिन् धर्मस्य यत्सुतः स्वामिनारायणाय स्वाहा। स हि प्रयोगे सम्प्राप भक्त्या सह पिता तव दीक्षां भागवतीं धीमान् मत एवाखिलार्थवित् स्वामिनारायणाय स्वाहा। मदाज्ञया कौसलेषु मुमुक्षून् स निजाश्रितान् उपादिशत् कृष्णभक्तिम् अहिंसाद्यैर्यमैः सह स्वामिनारायणाय स्वाहा। त्वं तु तदस्मादपि गुणैरधिकोऽसि महातपः अमर्त्य शङ्का हृदये धत्से स्वं पश्यतां नृणां स्वामिनारायणाय स्वाहा। सुव्रत उवाच स्वामिनारायणाय स्वाहा।
अनुग्रहं स्वपितरि श्रुत्वा सौ स्वामिनो भृशं मुमुदेथ गुरुं कर्तुं निश्चिकाय तमेव हि स्वामिनारायणाय स्वाहा। गुणे हि कृष्ण समे यस्मिन्नेव कृष्णोऽस्ति नित्यदा वशे चास्यति गिः सत्येत्येवं प्राह सतो हरिः स्वामिनारायणाय स्वाहा। तत्रो वाससुखेनैव सततो दृढनिश्चयः मानितो बहुधा तेन गुरुणेश्वरूपिणा स्वामिनारायणाय स्वाहा। आश्चर्यदर्शनं तं च नीलकण्ठतपस्विनं पश्यतां स्वामी भक्तानां विस्मयोन्महान्मथ स्वामिनारायणाय स्वाहा। स्वयं स्वाम्यपि तं दृष्ट्वा योगी दुष्प्राप सद्गुणं कृष्णस्यैव तनुं काञ्चिन्मेने धर्मावनक्षमां स्वामिनारायणाय स्वाहा। सर्वज्ञोऽप्युद्धवस्तं तु साक्षान्नारायणो ह्ययम् इति नो वेत्प्रतिभूतस्य नरनाट्यविदित्सया स्वामिनारायणाय स्वाहा। उद्घोषोऽथा भवल्लोके कश्चन स्वामिनोऽन्तिके बालो वर्णिह्यागतोऽस्ति तपस्वी योगिराडिति स्वामिनारायणाय स्वाहा। तदर्शनार्थमा जग्मुर्नानादेशभ्य आदृताः सहस्रशो नरा नार्यस्त्यागिनो योगिनोऽपि च स्वामिनारायणाय स्वाहा। पप्रच्छुस्ते गुरुं को वा वर्णी योद्यागतोऽत्र सः तान् स्वामी दर्शयामास तमङ्गुल्यान्तिके स्थितं स्वामिनारायणाय स्वाहा। तं वर्णिन् क्रूशतनुं वीक्षं तेति तपस्विनं विस्मयं परमं प्राप्यं प्रपच्छुः स्वामिनं पुनः स्वामिनारायणाय स्वाहा। कुतोऽयमागतो वर्णी बालोऽप्यतितपो बलः आश्चर्यं जनयन् नॄणां वेत्ति योगकलाश्च यः स्वामिनारायणाय स्वाहा। उपवीति च जटिलः शान्तो धमनिसन्ततः ऊर्ध्वपुण्ड्रं च तुलसीमालेणाजिनं ददत् स्वामिनारायणाय स्वाहा। उदासीन इवासीनो ध्यानस्तिमितलोचनः देहानुसन्धानहीनो निष्परिग्रह एषकः स्वामिनारायणाय स्वाहा। तान् स्वामी प्राह बालोऽयं कौसलेभ्य उपागतः आस्तां भगवतो भक्तो पीतरावस्य धार्मिको स्वामिनारायणाय स्वाहा। भक्तिज्ञानविरागाणां माहात्म्यं तन्मुखादयं शुश्राव बुद्धिमान् बालस्ततस्तत्प्राप्तुमैहत स्वामिनारायणाय स्वाहा। उत्कण्ठितोऽथ तत्सिद्धे यना पृच्छ सुहज्जनान् हित्वा गत्वा वनं घोरं तपश्चेकृतदारुणं स्वामिनारायणाय स्वाहा। तेनैव भक्तियुक्तेन षण्मासाभ्यन्तरे हरिं प्रसाद्य तीर्थानि चरन् प्राप्तोऽत्रास्ति यदृच्छया स्वामिनारायणाय स्वाहा। एतस्य चरितं चेतद्ध्रुवस्येवास्ति निश्चितं विष्णुं प्रणयितो बाल्ये दुराराध्यं सुरैरपि स्वामिनारायणाय स्वाहा। इति श्रुत्वा भगवतो वाक्यं ते विस्मिता जनाः ययुर्यथागतं नत्वा तं ध्रुवाभं च तं हरिं स्वामिनारायणाय स्वाहा। सुबुद्धिमथ तं राजन् क्रिया योगातिनैपुणम् अपहाराः यतो स्वामी कृष्णार्चार्यामयुयुजत् स्वामिनारायणाय स्वाहा। सोऽपि स्वधर्मं भक्तिं च पालयन्नेव नित्यदा कृष्णार्चावसरे तस्य गुरोः सन्निहितो भवत् स्वामिनारायणाय स्वाहा। स्नात्वा कुर्वति तस्मिंस्तु सन्ध्यादिम्नेत्यकं विधिं करोति स्मार्चनं विधेः पात्राणां परिमञ्जनं स्वामिनारायणाय स्वाहा। पूजायां क्रियमाणायां तुलसी पुष्पचन्दनं धूपं दीपं च नैवेद्यं तत्तत्काल उपाहरत् स्वामिनारायणाय स्वाहा। यथा कालमनुक्तोऽपि पदार्थं तं तमाहरत् इंगितज्ञो हरिस्तेन गुरोरपि मनोहरत् स्वामिनारायणाय स्वाहा। वर्णिनः कृष्णसेवायां श्रद्धातिशयमुत्तमं समीक्ष्य मुनिराट्तस्य वश आसीन्नरेश्वर स्वामिनारायणाय स्वाहा। कृष्णस्तु नित्यमर्चायाम् आविर्भूतो युद्धवार्पितान् साक्षाद्यादत्तोपहारांस्तं तं तदन्यस्तु नेक्षत स्वामिनारायणाय स्वाहा। एकदा नीलकण्ठस्य सर्वथैवाधिकारिणः तत्प्रत्यक्षेक्षणायासौ प्रत्यक्षं कृष्णमार्थयत् स्वामिनारायणाय स्वाहा। भगवन्नीलकण्ठाय मद्वत् प्रत्यक्षदर्शनं त्वयि प्रेमवत्यर्थं देहि सद्गुणशालिने स्वामिनारायणाय स्वाहा। सुव्रत उवाच स्वामिनारायणाय स्वाहा। तथास्त्विति ततः कृष्ण प्रतिजज्ञे महामुनिं
प्रहस्य दर्शनं प्रादात् प्रत्यक्षं स्वस्य वर्णिने स्वामिनारायणाय स्वाहा परिचर्यां गुरोः कुर्वन् हरिः श्रीकृष्णमेक्षत उपचारानाददानं प्रत्यक्षं स्वामिनार्पितान् स्वामिनारायणाय स्वाहा नैवेद्यं समदन्तं तं वीक्ष्य प्रापसमुद्भरं पूजाकाले गुरोरित्थं सोद्राक्षिदनुवासरं स्वामिनारायणाय स्वाहा एकदा प्राह स गुरुं नीलकण्ठोरः स्थितं मत्पूजावसरेत्पित्थं कथं स्यात् कृष्णदर्शनं स्वामिनारायणाय स्वाहा यथोपहारान् गृह्णाति त्वया दत्तान् स नित्यदा तथा मदर्पितान् प्रीतो ग्रहीष्यति कदाच्युतः स्वामिनारायणाय स्वाहा श्रीरामानन्दमुनिरुवाच स्वामिनारायणाय स्वाहा कृष्णदीक्षामवाप्तस्य महत्सेवातरतस्य च धर्मे भक्तो चाद्रिक्तस्य स्यात् शीघ्रं कृष्णवीक्षणं स्वामिनारायणाय स्वाहा सुव्रत उवाच स्वामिनारायणाय स्वाहा शिषेवे सोऽथ तं नित्यं भक्तिश्रद्धासमन्वितः चातुर्मास्यं यतीयाय तस्येथं कुर्वतः सतः स्वामिनारायणाय स्वाहा विक्रमार्कस्य नृपतेरष्टादशशतोत्तरे सप्तपञ्चाशत्तमेब्दे वर्तमाने शकस्य च स्वामिनारायणाय स्वाहा एकादश्यां प्रबोधन्याम् उत्तमायाधिकारिणे तस्मै दातुं महादीक्षाम् ऐच्छत् स्वं याचते सत्तां स्वामिनारायणाय स्वाहा दीक्षां ग्रहीतुं महतीं सवर्णिराट् समोत्सुकतस्य गुरोरुनज्ञया चकार पूर्वे द्युरुपोषणं शुचिर्दिवानिशं त्रक्षरमेव सम्पन्न स्वामिनारायणाय स्वाहा प्रमोदसंवत्सर ऊर्जमासे प्रातः सितेकादशिकादिने तं सदीक्षयामास यथा विधानं महोत्सवेनैव मुदा नरेन्द्र स्वामिनारायणाय स्वाहा इति श्री सत्संगीजीवने नारायणचरित्रे धर्मशास्त्रे प्रथमप्रकरणे रामानन्दस्वामी शुश्रूषण नाम 57तमोऽध्यायः स्वामिनारायणाय स्वाहा अथ 58तमोऽध्यायः सुव्रत उवाच स्वामिनारायणाय स्वाहा एकादशां मुनिपतिराजुहावद्विजोत्तमं निजाध्ववर्तनं शान्तं दीक्षाविधिविशारदं स्वामिनारायणाय स्वाहा तेनैव कारयामास तत्रत्यं सकलं विधि सोऽपि सर्वं यथा शास्त्रं करोति स्म यथोचितं स्वामिनारायणाय स्वाहा आदौ शरीरशुद्ध्यर्थं प्रायश्चित्तमकार्यत् प्रत्याम्नायेन कृत्स्राणां त्रयाणां स हरिं नृप स्वामिनारायणाय स्वाहा मण्डलं सर्वतो भद्रं नानावर्णसुशोभनं विधाय स्थापयामास स तत्र कलशान्नव स्वामिनारायणाय स्वाहा तत्र ताम्रमया नष्टोऽन्यथा दिक्ष्वष्टसुक्रमात् एकं हेममयं मध्ये सोस्थापयद्दुरादर्धि स्वामिनारायणाय स्वाहा सतो येषु सरत्नेषु सपल्लवफलेषु च सवासः पूर्णपात्रेषु तेषु देवानतिष्ठिपत् स्वामिनारायणाय स्वाहा श्रीराधासहितं कृष्णं तत्र मध्यघटे न्यधात् प्राच्यां भगवतीं दुर्गां दक्षिणे भास्करं तथा स्वामिनारायणाय स्वाहा प्रतीच्यां विघ्नराजं च शिवं सौम्याम् अतिष्ठिपत् विश्वक्सेनं वह्निदिशि नैऋत्यां गरुडं च सह स्वामिनारायणाय स्वाहा अस्थापयच्च कलशे वायव्यां पवनात्मजं श्रीदामानं तथेशान्यां क्रमेणेवं यथाविधि स्वामिनारायणाय स्वाहा ततो वेदपुराणोक्तेर्मन्त्रेर्मूलेन च द्विजः प्रधानदेवतां कृष्णं सहाङ्गैरार्चयत् सुरैः स्वामिनारायणाय स्वाहा उपचारैः षोडशभिः सह पञ्चामृतेन च महानैवेद्येन महादीपेन समपुपूजत् स्वामिनारायणाय स्वाहा मृदङ्गकांस्यतालाद्यैर्भक्तानां कीर्तनध्वनिः तूर्यानकादिशब्देन मिश्र आसीन् महांस्तदा स्वामिनारायणाय स्वाहा संस्कृतायां ततो वेद्यां वह्निं संस्थाप्य चाजुहोत् मूलेन मनुजाजस्य सोष्टोत्तरशताहुतिः स्वामिनारायणाय स्वाहा
ततो महामुनिः प्रादात् कोऽपि नाच्छादनं सितम् उत्तरीयं च हरये स्थिताय प्राङ्मुखाय सः स्वामिनारायणाय स्वाहा। प्रासादिक्यो भगवतस्तुलसीकाष्ठमालिके सूक्ष्मेन विनिसदद्दो कण्ठधार्ये च वर्णिने स्वामिनारायणाय स्वाहा। कृष्णार्चाशिष्टगन्धेन पुण्ड्रमूर्ध्वं तदन्तरे राधार्चाशिष्टकाश्मीरचन्द्रकं चाप्यकारयत् स्वामिनारायणाय स्वाहा। उदङ्गमुखस्ततः स्वामी ध्यात्वा श्रीकृष्णमस्य च अष्टाक्षरं कृष्णमन्त्रं दक्षकर्ण उपादिशत् स्वामिनारायणाय स्वाहा। हरये शुद्धमतये मन्त्रस्यार्थं ततो गुरुः यथावद्बोधयामास सम्प्रदायानुसारतः स्वामिनारायणाय स्वाहा। क्षेत्रं पिण्डं च ब्रह्माण्डं द्विविधं योऽभिमन्यते अल्पज्ञः सर्वविच्चासो क्षेत्रज्ञोत्तमोच्यते स्वामिनारायणाय स्वाहा। अन्वितं द्विविधे चात्र क्षेत्रज्ञे तन्नियन्त्रि च व्यतिरिक्तं ततो यच्च तद्ब्रह्माक्षरमुच्यते स्वामिनारायणाय स्वाहा। यमाश्रित्य प्रेरयति क्षेत्रज्ञमिदमक्षरं पुरुषोत्तमसंज्ञो सावक्षरातीत उच्यते स्वामिनारायणाय स्वाहा। स एव श्रेयसे नॄणां धृतदिव्यनराकृतिः स्वाज्ञानं ज्ञानदानेन कर्षन् कृष्ण इतीर्यते स्वामिनारायणाय स्वाहा। प्रेम्णा तत्सेवनेनेव यच्छो भावत्वमात्मनः स एव दासशब्दार्थो मन्त्रेऽस्मिन् परिकीर्तितः स्वामिनारायणाय स्वाहा। अस्मीति पूर्णकामत्वं ज्ञेये प्राप्येऽपि चात्मनः शेषाभावश्च विज्ञेयो मुक्तत्वाज्जीवतो यतः स्वामिनारायणाय स्वाहा। वैकुण्ठेऽथ च गोलोके श्वेतदीपे बृहत्पुरे यथा प्राप्ता भगवतः पूर्णकामाश्च सेवया स्वामिनारायणाय स्वाहा। भक्तः सन्ति तथैवात्र हरिः प्रत्यक्षलम्भनात् सेवया चास्ति पूर्णत्वम् इति मन्त्रार्थमाह सः स्वामिनारायणाय स्वाहा। अन्तःकरणवृत्तीनां बहिर्गतिनिरोधनं हृदि प्रकाशः कृष्णेक्षा स्यादित्याह च तत्फलं स्वामिनारायणाय स्वाहा। मन्त्रार्थं बोधयित्वेत्थं गुरुस्तं पुनरब्रवीत् यावद्देहस्मृतिस्तावद्धर्मं क्वचन न त्यजेः स्वामिनारायणाय स्वाहा। सन्ति श्रुत्वा त्वया धर्मा अस्वद्धानुसारिणः सर्वेऽपि जनकादेव पाल्यन्ते ते च नित्यदा स्वामिनारायणाय स्वाहा। अत्यजन्येव तान् सर्वान् विशेषनियमांश्च देहे कृष्णार्चां नियमेनान्तर्बहिः कुर्याश्च नित्यदा स्वामिनारायणाय स्वाहा। पञ्चाध्यायीं पठित्वादो पूजान्ते निजशक्तितः श्रीवासुदेव माहात्म्यं पठेरेकाग्रमानसः स्वामिनारायणाय स्वाहा। भोज्यं कृष्णप्रसाद्यन्नं पेयं वारि च तादृशम् अनर्पितं तु कृष्णाय नाद्यं फलदलाद्यपि स्वामिनारायणाय स्वाहा। नाम संकीर्तनं कुर्याः श्रीकृष्णस्य च सर्वदा भक्तिं विना भगवतो व्यर्थं कालं तु मा कृथा स्वामिनारायणाय स्वाहा। यत्र कृष्णस्य माहात्म्यं चरितं वा भवेन्मुने तद्ग्रन्थस्य कथा श्रव्या प्रत्यहं नित्यमेव च स्वामिनारायणाय स्वाहा। तत्कथा श्रवणादेव तद्भक्तिर्वर्धतेतरां सातः श्रव्या वक्तृभावे वाच्यास्नेन्नेव नित्यदा स्वामिनारायणाय स्वाहा। एवं धर्मानुपादिश्य रामानन्दमुनिर्नृप तस्य शिष्यस्याभिधानं चक्रेन्वर्थं विचार्य च स्वामिनारायणाय स्वाहा। सहजानन्द इत्याह प्रथमं नाम तस्य सः तत्तो नारायणमुनिरितिश्चक्रेऽभिधा स्वयं स्वामिनारायणाय स्वाहा। तपसा च स्वभावेन मूर्त्याकारेण सर्वथा नारायणमुनिः साम्यात् तामे वाक्यां मुदाकरोत् स्वामिनारायणाय स्वाहा। ततो हरिः स्वामिनं तं पूजयामास सादरं प्रदक्षिणां विधायैव दण्डवत् प्रणनाम च स्वामिनारायणाय स्वाहा। साधून् विप्रान् वैष्णवांश्च विनयेनार्चयत्ततः विप्रः समापयामास तद्विधिं विधिवत्तु सः स्वामिनारायणाय स्वाहा। बद्धाञ्जलिपुटस्थस्थो वर्णिराट् गुरुसन्निधौ तस्मै प्रसन्नः स प्राह स्वेप्सितं वृणुमध्वरं स्वामिनारायणाय स्वाहा। श्रीनीलकण्ठ उवाच स्वामिनारायणाय स्वाहा।
आविर्भूय त्वदर्चायां साक्षात् कृष्णो यथान्वहम् उपहारन् समादत्ते भुङ्क्ते हसति भाषते स्वामिनारायणाय स्वाहा तथान्वहं मदर्चार्या माविर्भूय स्वयं स च कुर्यादित्यस्ति मे भीष्टं देहि प्रीतोऽसि चेदिदं स्वामिनारायणाय स्वाहा सुव्रत उवाच स्वामिनारायणाय स्वाहा तथास्त्वित्याह मुनिराट् तस्मै प्रीतोऽथ तन्निशि सर्वे जागरणं चक्रुः कृष्णसङ्कीर्तनादिभिः स्वामिनारायणाय स्वाहा अभोजयत् प्रगे स्वामी विप्रान् साधुश्च वर्णिनः तदभीष्टेर्भक्षभोज्येस्तेभ्यो दाद्वस्त्रदक्षिणः स्वामिनारायणाय स्वाहा हरेश्च पूजावसरे प्रत्यक्षः स्वामिवन् नृप उपहारग्रहादीनि कृष्णश्चक्रेऽनुवासरं स्वामिनारायणाय स्वाहा प्रत्यक्ष कृष्ण विक्षाद्य हि स सम्पूर्ण मनोरथः कृतकृत्यं स्वामिमात्मं गुरुवे संवेदयत् स्वामिनारायणाय स्वाहा राधया सहितं कृष्णं क्वचित् प्रत्यक्षमैक्षत द्विभुजं वादयन्तं च वेणुं नटवराकृतिं स्वामिनारायणाय स्वाहा क्वचिद्रामेण सहितं रुक्मण्या सहितं क्वचित् काप्यर्जुनेन सहितं तं काप्येकमेक्षत स्वामिनारायणाय स्वाहा द्विबाहुमपि त्वं क्वापि चतुर्भुजमवेक्षत ततोऽस्य परमः प्रेम कृष्णे भूयानवर्धत स्वामिनारायणाय स्वाहा इत्थं द्रुनाट्यं परिशीलयन् हरिस्तपस्वी लीलां विदधरेश शुश्रूषणं कृष्णधियानुकालं गुरोः करोति स्म भृंश विनीतः स्वामिनारायणाय स्वाहा इति श्रीसत्सङ्गिजीवने नारायणचरित्रे धर्मशास्त्रे प्रथमप्रकरणे महादीक्षाग्रहणनाम 58तमोऽध्यायः स्वामिनारायणाय स्वाहा अथ 59तमोऽध्यायः सुव्रत उवाच स्वामिनारायणाय स्वाहा प्राप्तेऽपि शिशितां तस्मिन् शुश्रूषायते हरो स्वामिनः सखी भावो भूत् सर्वसद्गुणमण्डिते स्वामिनारायणाय स्वाहा बुद्धिमन्तं तमेवासौ पृष्ट्वैव व्यावहारिकम् अपि कार्यं करोति स्म प्रोचे च स्वमनोगतं स्वामिनारायणाय स्वाहा साकं तेन स्वभक्तानां ग्रामेषु विवचारसः रेवतोपत्यकास्वेव कृष्णभक्तिं प्रवर्तयन् स्वामिनारायणाय स्वाहा क्वचिन्मासं क्वचित् पक्षं क्वचित् पञ्चदिनानि च वसन्नुपागमत् स्वामी जयन्ताख्यं पुरं नृप स्वामिनारायणाय स्वाहा उन्नडाख्येन भूपेन धर्मनिष्ठेन तत्र सह बहुधा पार्थितो वात्सीत् जनानां नन्दयन् निजान् स्वामिनारायणाय स्वाहा तत्र नारायणमुनिर्गुरुसेवापरायणः नित्यं तस्थावतिक्रम्य शिष्यान् सर्वान् निजैर्गुणैः स्वामिनारायणाय स्वाहा तस्मिंस्त्वेते गुणा नित्या आसन् नृपति सत्तम सर्वत्र सर्वकालेऽपि स्वस्वरूपे चला स्थितिः स्वामिनारायणाय स्वाहा सत्यं शौचं दया क्षान्तिस्त्यागः सन्तोष आर्जवम् शमोदमस्तपः साम्यं तितिक्षोपरतिः श्रुतं स्वामिनारायणाय स्वाहा ज्ञानं विरक्तिरेश्वर्यं शौर्यं तेजो बलं स्मृतिः स्वातन्त्र्यं कौशलं कान्तिर्धैर्यं मार्दवमेव च स्वामिनारायणाय स्वाहा प्रागल्भ्यं प्रश्रयशीलं सह ओजो बलं भगः गाम्भीर्यं स्थैर्यमास्तिक्यं कीर्तिर्मौनमगर्वता स्वामिनारायणाय स्वाहा अमानित्वमदद्भित्वं मिताहारश्च दक्षता मैत्री सर्वोपकारित्वं कामे रक्षुब्धचित्तता स्वामिनारायणाय स्वाहा अद्रोहो मानदत्वं च षडूर्मि विजयस्तथा ब्रह्मण्यत्वं शरण्यत्वम् अनीहा चापरिग्रहः स्वामिनारायणाय स्वाहा श्रीराधिका परिवृढे भक्तिश्च परमाचला अतिप्रेम्णा च निर्दम्भं गुरुशुश्रूषणं तथा स्वामिनारायणाय स्वाहा शिष्या मुनिपतेस्त्वेतांस्तस्य सर्वाधिकान् गुणान् विलोक्य विस्मयं प्रापुः स्वाधिकं मे निरेचतं स्वामिनारायणाय स्वाहा गुरोः प्रियं कुर्वतोऽस्य वसतश्च तदन्तिके वर्षद्वयं व्यतीताय नारायण मुने नृप स्वामिनारायणाय स्वाहा
एवं विधं तमालक्ष्य रामानन्दमुनिस्ततः तस्मिन् यस्य धुरं स्वीयाम् इतोऽन्तर्धातुमयि हत स्वामिनारायणाय स्वाहा सर्वेषां निजभक्तानाम् अथ तं शृण्वतां सतां स उचे व्यवहारेषु विरक्तमपि योजन स्वामिनारायणाय स्वाहा श्रीरामानन्दस्वाम्युवाच स्वामिनारायणाय स्वाहा नारायणमुने धीमन् शृणुमद्वाक्यमादरात् श्रुत्वा च तत्तथैव त्वं कर्तुमर्हसि सर्वथा स्वामिनारायणाय स्वाहा एते मदाश्रिताः सन्ति कृष्णभक्ता नरः स्त्रियः स्थापनीयास्त्वया धर्ममर्यादां तु तेऽखिलाः स्वामिनारायणाय स्वाहा श्रीवासुदेवमाहात्म्यं यत्त्वया पठ्यतेऽन्वहं वर्णाश्रमवतां धर्मास्तत्र स्त्रीणां च सन्ति हि स्वामिनारायणाय स्वाहा यथाधिकारं तेष्वेव स्थापनीयास्त्वया जनः ग्राह्यं श्रीविठ्ठलेनोक्तं कृष्णसेवनवर्त्मतु स्वामिनारायणाय स्वाहा व्रतानाम् उत्सवानां च सर्वेषां राधिकापतेः प्रवर्तनीयस्तत्प्रोक्तो निर्णयो वैष्णवोचितः स्वामिनारायणाय स्वाहा संप्रदाये स्थितिः पूर्वमासीद्रामानुजस्य मे उपद्रवो महास्तत्र वैष्णवैर्मत्सराकृतः स्वामिनारायणाय स्वाहा ततो हित्वा बाह्यमेव तद्वर्त्मेदं मया भुवि नूत्नं प्रवर्तितं वर्त्म सच्छास्त्राणि अनुसृत्य वै स्वामिनारायणाय स्वाहा अध्यात्मज्ञानसिद्धेतु रामानुजकृता मया ग्रन्थाः संस्थापिताः सन्ति कृष्णोपासनपोषकाः स्वामिनारायणाय स्वाहा अतो रूपाणि निश्चेतुं जीवमायापरात्मनां रामानुजाचार्यकृतभाष्यादित्वं प्रवर्तयेः स्वामिनारायणाय स्वाहा इत्याज्ञामपाल्या ते सर्वशास्त्रार्थवेदिनः त्वमेक एव मत्स्थाने स्थातुर्मर्होसि साम्प्रतं स्वामिनारायणाय स्वाहा यस्मिन् दिने भवान् दृष्टस्तत आरभ्य मे त्वयं मनोरथो भवति त्वं पूरयितुमर्हसि स्वामिनारायणाय स्वाहा वैराग्यतीव्रतां वेद्मि तव नूनमहं मुने तथाप्येतत्त्वयेव स्यात् कार्यं नान्येन केनचित् स्वामिनारायणाय स्वाहा स्वीकार्या जनपूजा च वस्त्रालङ्कारसंयुता आरोहणं त्वया कार्यं रथवाजिगजादिषु स्वामिनारायणाय स्वाहा सर्वतः कलिदोषेभ्यो रक्षणीयास्त्विमे त्वया शक्तोऽसि रक्षणं कर्तुं त्वमेव तपोधन स्वामिनारायणाय स्वाहा द्रव्यस्त्रिभिः क्रुध्याद्यैश्च पराभाव्यो न सर्वथा त्वमसीत्येव जानामि गुणैः कृष्णभ्रमप्रदः स्वामिनारायणाय स्वाहा न धर्मसङ्करं कर्ता धीरो गाङ्गेयवद्भवान् भवतीति विदित्वेव स्वामित्वे स्थाप्यते मया स्वामिनारायणाय स्वाहा सुव्रत उवाच स्वामिनारायणाय स्वाहा श्रुत्वेति सद्गुरोर्वाक्यं नारायणमुनिनृप क्षणं विचिन्त्य हृदितं प्रत्यूचे विमना इव स्वामिनारायणाय स्वाहा श्रीनारायणमुनिरुवाच स्वामिनारायणाय स्वाहा शिष्यैराज्ञा गुरोः पाल्या धर्म एष सनातः तथाप्येतद्वचः कर्तुं प्रभो नाहं समुत्सहे स्वामिनारायणाय स्वाहा वर्णिधर्मान् समाश्रित्य स्थितस्य खलु सत्पते एतत्त्वद्वचनं मन्ये लोकशास्त्रजुगुप्सितं स्वामिनारायणाय स्वाहा आघ्राय यद्गन्धमात्रमपि कुर्वे पलायनं सोऽहं तासां कथं स्त्रीणां करिष्ये निकटे स्थितिं स्वामिनारायणाय स्वाहा स्त्रीप्रसङ्गो मुमुक्षूणां महान् पाशो हि बन्धकृत् मुक्ताप्यभवन् भ्रष्टा बहवो येन तत्क्षणे स्वामिनारायणाय स्वाहा नैष्ठिकव्रतवान् पुंस्त्रीभेददृष्ट्यापि वर्जितः ऋष्यशृङ्गः स्त्रीप्रसङ्गाद् भ्रष्टो भूत्स्व बृहद्व्रतान् स्वामिनारायणाय स्वाहा सङ्गात् सञ्जायते कामः कामात् क्रोधोऽभिजायते क्रोधात् भवति सम्मोहः सम्मोहात् स्मृतिविभ्रमः स्वामिनारायणाय स्वाहा स्मृतिभशान्तबुद्धिनाशो बुद्धिनाशात् प्रणश्यति स्त्रीप्रसङ्गात् ततः स्वामिन् बिभ्येमहमिह ध्रुवं स्वामिनारायणाय स्वाहा न कुर्यात् कर्हिचित् सख्यं मनसि ह्यनवस्थिते यद्विस्रम्भाच्चिराचीर्णं च स्कन्दतप ऐश्वरं स्वामिनारायणाय स्वाहा नित्यं ददाति काम
तमस्य छिद्रं तमनुयेरयः योगिनः कुत्रमेत्रस्य पत्युर्जायेव पुंश्चली स्वामिनारायणाय स्वाहा कामो मन्युर्मदो लोभः शोकमोह भयादयः कर्मबन्धश्च यन्मूलस्वीकुर्यात् को नु तद्बुधः स्वामिनारायणाय स्वाहा कर्तव्यो मनसः संगो यदि भूतानुकम्पया तत्राप्युपेक्षया युक्तेव यतः कर्म फलं जगत् स्वामिनारायणाय स्वाहा दययापि मनोऽन्यत्र कृष्णाद्य योजयन्ति ते मृगसङ्गाद् भरतवद् पश्यन्त्येव निजस्थितेः स्वामिनारायणाय स्वाहा प्रदीप्तेऽग्नो निपातं वा वरं मन्ये विशासनं न त्वहं स्त्रेण सम्बन्धं कदाचिदपि कस्यचित् स्वामिनारायणाय स्वाहा धनादीनां प्रसङ्गोऽपि न मे रुचिकरस्तथा सुशीलोऽपि दुराचारे प्रवृत्तो येन जायते स्वामिनारायणाय स्वाहा धनासक्त्यावशिष्टोऽपि पुरा भ्रष्टर्मतिर्नृपं निशिंशशापधर्मिष्ठं व्याख्याद्वेष्यासुतः स्वयं स्वामिनारायणाय स्वाहा देशः कालः क्रिया ध्यानं शास्त्रं दीक्षा तथा मनुः सङ्गश्च यादृशा ह्येते तादृक् तत्सेविनां फलं स्वामिनारायणाय स्वाहा शुभे रेतेः सेवितस्तु शुभा वृद्धिर्भवेन्द्रूणाम् अशुभेस्तेर्भवेद् बुद्धि अशुभः नात्र संशयः स्वामिनारायणाय स्वाहा यादृशी यस्य बुद्धिः स्यात् कर्म कुर्यात् स तादृशं कर्मानुरूपं च फलं प्राप्नुयात् स ततः पुमान् स्वामिनारायणाय स्वाहा असतो देशकालादिन्न सेवेत ततः सुधिः विहाय ताच्छुभावेन हितार्थी शीघ्रमाश्रयेत् स्वामिनारायणाय स्वाहा निपीतं मद्यभङ्गादिशास्त्रज्ञं वा झडं नरं मादयित्वा यथा सद्यो नयत्युन्मत्ततां खलु स्वामिनारायणाय स्वाहा तथैव स्त्रीधनं वापि मादयित्वा स्वसेविनम् उत्पथं प्रापयत्येव विद्वांसमपि सात्विकं स्वामिनारायणाय स्वाहा ईदृक्स्वभावमेवैतद्वर्तते वस्तु सर्वथा स्वाभाविकं गुणं नैव हातुं शक्नोमि कश्चन स्वामिनारायणाय स्वाहा स्त्रीणावातो धनादीनां प्रसङ्गे मम निश्चितं स्वाभाविकी रुचिर्नास्ति सत्यमेतद्वद्यामहं स्वामिनारायणाय स्वाहा सद्गुरोस्तव चाज्ञायाः प्रतिवादोऽपि नोचितः तन्मे खिद्यते चेत्तस्ततस्त्वं ब्रूहि मे हितं स्वामिनारायणाय स्वाहा सर्वेषां धर्ममर्यादा रक्षणेसि त्वमीश्वरः अतोऽत्र किं नु न मे कार्यमेतदन्यत् प्रसादि मां स्वामिनारायणाय स्वाहा सुव्रत उवाच स्वामिनारायणाय स्वाहा प्रतिवाक्यं गुरुश्रुत्वा नारायणमुनेरिति स्वामित्वं स्थापयंस्तस्मिन् स्वहार्दं तुमुवाच सः स्वामिनारायणाय स्वाहा श्रीरामानन्द स्वाम्युवाच स्वामिनारायणाय स्वाहा सन्मते शृणु मद्वाक्यं तद्वार्थं वेद्म्यहं ननु मया यत् क्रियते तत्तु विचार्येव न चान्यथा स्वामिनारायणाय स्वाहा समर्थो धर्मरक्षायाम् अहं स्वाश्रितदेहिनां वर्ते हि साम्प्रतं भूमौ सत्यमेतत्त्वयोच्यते स्वामिनारायणाय स्वाहा तथापि त्वयि सत्शिष्ये धूरमध्यस्य सुव्रत निश्चितः कृतकार्योऽहं हातुमिच्छाम्यदो वपुः स्वामिनारायणाय स्वाहा न त्वादृशं कञ्चिदन्यं पश्याम्यत्र च धूर्वहम् अतो मद्वचनं तात कर्तुमर्हसि सर्वथा स्वामिनारायणाय स्वाहा वर्णिनां व्रतभङ्गः स्यात् स्त्रीभिः सम्भाषणादिना इति त्वयोदितं यत् सत्यमेव न संशयः स्वामिनारायणाय स्वाहा अन्ये ते वर्णिनो येषां स्त्रियादिभिर्लुप्यते व्रतम् अमानुषक्रियस्त्वं तु न वर्णी प्राकृतो ह्यसि स्वामिनारायणाय स्वाहा वर्तितुं स्त्रीसहस्रेषु निर्विकारतया नघ स्वर्णपुंश्चेष्वपि तथा शक्तिरस्ति तवेव हि स्वामिनारायणाय स्वाहा सूर्यनारायणः साक्षात् वरदाता तव प्रभुः कामादे रक्षणं कर्ता राजते हृदये तव स्वामिनारायणाय स्वाहा सर्वथैव समर्थस्त्वं विदितोऽसि मयाञ्जसा अतश्चिरन्तनानेतान् पीहित्वा त्वमर्थ्यसे स्वामिनारायणाय स्वाहा त्वदन्यवर्णिनस्त्वङ्गस्त्रीकथाश्रवणादपि भ्रष्टा भवेयुः सहसा किं पुनर्दर्शनादिभिः स्वामिनारायणाय स्वाहा संसर्गः स्त्रीधनादीनां त्याज्योतः सर्वथैव ते त्वं त्वीश्वरः स्वाश्रितानां कुरु धर्मादिरक्षणं स्वामिनारायणाय स्वाहा सुव्रत उवाच स्वामिनारायणाय स्वाहा इत्याकर्ण्य गुरोर्वाक्यं मानयंस्तं सवर्णिराट्
प्रतिजग्राह तद्वाक्यम् अनिच्छन्नपि भूपते स्वामिनारायणाय स्वाहा स्ववाचित्थं स्वीकृतायां तेनाथ स मुनीश्वरः उपवेश श्वासने तं चन्दनादिभिरार्चितत् स्वामिनारायणाय स्वाहा महोत्सवं कारयित्वा गीतवाद्यपुरोगतं सुप्रसन्नमनः स्वामी स्वाश्रितान् इदमब्रवीत् स्वामिनारायणाय स्वाहा श्रीरामानन्द स्वाम्युवाच स्वामिनारायणाय स्वाहा शृण्वन्तु मामकाः सर्वे गृहिणस्त्यागिनस्तथा अयं नारायणमुनिर्मम स्थानेऽस्ति निश्चितं स्वामिनारायणाय स्वाहा मनुष्याणां सुदुष्प्रापैः सम्पन्नः सद्गुणैरयं युष्माकं धर्ममर्यादा पालनेस्त्येव शक्तिमान् स्वामिनारायणाय स्वाहा तदेतद्दिनमारभ्य स्थेयमस्येव शासने सर्वेद्भवद्भिरित्याज्ञा मम पाल्येव सर्वथा स्वामिनारायणाय स्वाहा स्वामिन्नेवं करिष्याम इत्युचुस्ते ततोऽखिलाः प्राञ्जलिं वर्णिराजं च तदोवाच पुनर्गुरुः स्वामिनारायणाय स्वाहा महामुने प्रसन्नोऽस्मि मदाज्ञापालनात्वयि अतस्त्वं वाञ्छिता स्वस्य वरान् वरं काञ्चन स्वामिनारायणाय स्वाहा अदेयं नास्ति मे किञ्चित् तुभ्यं ब्रह्माण्डगोलके महापुरुष तद्ब्रूहि निश्चितं निजवाञ्छितं स्वामिनारायणाय स्वाहा सुव्रत उवाच स्वामिनारायणाय स्वाहा इति संचोदितस्तेन वरार्थं स महामुनिः नीलकण्ठ उवाचेदं सर्वजीवदयानिधिः स्वामिनारायणाय स्वाहा श्रीनीलकण्ठ उवाच स्वामिनारायणाय स्वाहा यदि तव वरदानपात्रता मे वितर तदा तु मयेप्सितान् वरांस्त्वं मृदुलपदसरोरुहद्वये मे मतिरचलास्तु सदैव नन्दसूनोः स्वामिनारायणाय स्वाहा इह च यदुर्दुःखमन्तकाले यगणितवृश्चिकदंशतुल्यमाहु यदि तरदपि तच्च वैष्णवानां भवतु ममाथ च ते तु स्वन्त्वदुःखः स्वामिनारायणाय स्वाहा क्वचिदपि भुवि कृष्णभक्तिभाजां निजकृतकर्मवशादवश्य भोग्यम् इह यदुरु तथा न वस्त्रदुःखं तदपि ममास्तु न तु प्रजेश तेषां स्वामिनारायणाय स्वाहा व्रजरमणकथा च यत्र यत्र प्रथितगुणाश्च भवेयुरीश सन्तः मम भवतु सदैव तत्र वासो न तु भवसक्तधियां क्वचित् प्रसङ्गे स्वामिनारायणाय स्वाहा वाणी मे गुणकीर्तने भगवता कर्णो कथायाः श्रुतो सेवायां च भुजो स्मृतौ च हृदयं भूयादृशो लोचने कृष्णार्थेव मम क्रियास्तु सकला शारीरिकी मानसी दुःसङ्गः क्वचनापि मास्त्विह विभो देहि त्वमेतान् वरान् स्वामिनारायणाय स्वाहा सुव्रत उवाच स्वामिनारायणाय स्वाहा एवं स भगवान् कृष्णोपासनारीति मञ्जसा सेवारीतिं सद्गुरोश्च शिक्षयन्नात्मसंसृतान् स्वामिनारायणाय स्वाहा शोभयंश्च स्वानुकृतं नरनाट्यं नराधिप ईश्वरोऽपि गुरुं भक्त्या प्रार्थयामास भक्तवत् स्वामिनारायणाय स्वाहा इति सम्प्रार्थयन्तं तं प्रोवाच वचनं गुरुः मनोरथास्ते सम्पूर्णा भविष्यन्ति न संशयः स्वामिनारायणाय स्वाहा परोपकारिकपरायणाय नारायणायेति वरान् सदत्वा स्थितस्तदीयानन पद्ममेव विलोकते स्म स्थिरयात्मदृष्ट्या स्वामिनारायणाय स्वाहा तस्मै प्रसन्नोऽथ सोऽपि कृष्णः स्वातिप्रियायात्मयथार्थबोधम् ददावचिन्तन विदधिशो मे विवेदं तं सोमपि निजेष्टदेवं स्वामिनारायणाय स्वाहा
गोलोकसंस्थाक्षरदिव्यधाम्नि यादृक्ष्पदृष्टश्च बृहद्वनादो विलोक्यतं तादृशमेव कृष्णम् आनन्दवार्धो निममज्ज सद्यः। स्वामिनारायणाय स्वाहा। चिरं निभाल्याथ तमेव भक्ता रक्षाविधानाय च धर्मगुप्त्ये तत्रागतं हृद्यवगत्य सद्यो निश्चितम् आसीन् नृप पूर्णकामः। स्वामिनारायणाय स्वाहा। नृनाटनं तस्य विभोर्विधिसोर्हार्दं विदन्नान्यजनाय तत्तु प्राकाशयद्वेदनमात्मबुद्धम् एकान्तिको भक्तवरो यतोऽसौ। स्वामिनारायणाय स्वाहा। तस्मिंस्ततः शिष्यधियं विहाय निजेश बुद्ध्यारदि भावयन् सः वृतस्तदाद्यैर्निज शिष्यमुख्यैस्ततः फणिग्राममियाय भूप। स्वामिनारायणाय स्वाहा। स्वामी 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 सहजानंद स्वामी। 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 भले पधारा स्वामी सहजानंद स्वामी। भले पधार्या स्वामी सहजानंद स्वामी। भले पधारा स्वामी सहजानंद स्वामी। भले पधार्या स्वामी सहजानंद स्वामी। जेतपुर माँ गादिए बैठा सहजानंद स्वामी। जेतपुर माँ गादिए बैठा सहजानंद स्वामी। आज सरदार माँ गादिए बैठा सहजानंद स्वामी। सरदार माँ गादिए बैठा सहजानंद स्वामी। स्वामी 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 नारायण। 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 स्वामी 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 सहजानंद स्वामी। स्वामी 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 सहजानंद स्वामी। भले पधारा स्वामी सहजानंद स्वामी। भले पधार्या स्वामी सहजानंद स्वामी। हे विलसित चरणारविंद कोमल अति प्रेम कंद ध्यावत भवमित फंद छंद स्तवन बोले प्रसरत जय पद प्रसंग पुण्य भरित सरित गंग यग विनाश पर सयंग हो तंग डोले राजतमय ऊर्ध्वरेख व्रजादिक सहित प्रेक ब्रह्मानंद देख देख लेखत कुर्बानी। जय जय घनश्याम श्याम अम्बुज द्रग कृत उदाम सुंदर सुखदाम नाम सावरे गुमानी। सुंदर सुखदाम नाम सावरे गुमानी। जिरे सुंदर सुखदाम नाम सावरे गुमानी। सरदार माँ गादिए बैठा सहजानंद स्वामी। सरदार माँ गादिए बैठा सहजानंद स्वामी। आज वाड़ी ये गादिए बैठा सहजानंद स्वामी। वाड़ी ये गादिए बैठा सहजानंद स्वामी। स्वामी 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 सहजानंद स्वामी। बंधु सहजानंद रस रूप अनुपम सारने रे लो। हे जैने बजता छूटे फंद के जैने बजता छूटे फंद करे भव पार रे लोल। बंधु सहजानंद रस रूप अनुपम सारने रे लोल। समरूप प्रगट रूप सुख धाम अनुपम नाम ने रे लोल।
ब्रह्मादिक देव के जैने बब ब्रह्मादिक देव बजे तजी कामने रे लोल बंधु सहजानंद रस रूप अनुपम सारने रे लोल अनुपम सारने रे लोल। हे वाला रम जम करता कान मारे घेर आवो रे। हे मारा पूरा करवा कौन, हे मारा पूरा करवा कौन, हंसी ने बोलावो रे। वाला रम जम करता कान मारे घेर आवो रे। हे मारे तम संग लागी प्रीत श्याम सुहागी रे। संग रमवा काज, हे मैं तो तम संग रमवा काज, हे लजा त्यागी रे। वाला रम जम करता कान मारे घेर आवो रे। वाला रम जम करता कान मारे घेर आवो रे। मार घेर आव्या रे सुंदर वर श्यामणियो। मार घेर आव्या रे सुंदर वर श्यामणियो। हरख भरी हूँ हरि ने निरखू, हरख भरी हूँ हरि ने निरखू। पियू प्रीतम पातलियो रे सुंदर वर श्यामणियो। मार घेर आव्या रे सुंदर वर श्यामणियो। में पनियारा रे लो ये जगामना।
तुम जपते चलो, तुम रटते चलो, इस नाम से मुक्ति, इस नाम से मुक्ति मिलती है, इस नाम से दुनिया चलती है। नाम रटो रटते ही रहो, तुम जाप जपो जपते ही रहो, इस नाम के सब दीवाने हैं, इस नाम के सब दीवाने हैं। इस नाम से हम भयभीत हुए, इस नाम से प्राणी जीवित हुए, इस नाम की महिमा, इस नाम की महिमा बारी है, इस नाम पे दुनिया वारी है। इस नाम की महिमा भारी है, इस नाम पे दुनिया भारी है, इस नाम से हरिवर खूब मिले, इस नाम से हरिवर खूब मिले। स्वामी नारायण सब रटते हैं नित नाम यही, जो प्रभु भक्ति में, जो प्रभु भक्ति में लीन हुए, जो मूर्ति में गुलतान हुए। मद मान तजो अभिमान तजो, स्वामी नारायण भगवान भजो। मद मान तजो अभिमान तजो, स्वामी नारायण भगवान भजो। मद मान तजो अभिमान तजो, मद मान तजो अभिमान तजो, स्वामी नारायण भगवान भजो। स्वामी नारायण स्वामी नारायण स्वामी नारायण स्वामी नारायण, स्वामी नारायण स्वामी नारायण स्वामी नारायण स्वामी नारायण, स्वामी नारायण स्वामी नारायण। हरे कृष्ण बिना दुख कौन हरे, हरे कृष्ण बिना दुख कौन हरे, घनश्याम बिना सुख कौन करे। तिरोहति एतावानस्य महिमा तो जायाश्च पुरुखः, पादोस्य विश्वग्राम्याश्च ये यश्च ये यत्पुरुखं व्यदधुः कतिधा व्यकल्पयन्, मुखं यः कृतः उरु तदस्य यद्वैश्यः, पद्भ्यां गों शूद्रो अजायत, चन्द्रमा मनसो जातश्च नाभ्या आसीदन्तरिक्षगौ शीष्णोर्द्योः समवर्तत, पद्भ्यां भूमिर्दिशः जन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्, तेहनाकं महिमानः सचन्द्र जत्र पूर्वे साध्याः। प्रभु भक्ति धर्मात्मजो जन्मो, कृष्णो नारायणो हरिः, हरि कृष्णो घनश्यामो धार्मिको भक्तिनन्दन, बृहद्व्रतधर शुद्धो राधा भोगकला प्रवृत्तिरतिधैर्यवान्,
ज्ञानी परमहंसश्च तीर्थकृत्यर्थिकार्चित क्षमानिधि सदो निद्रोद्याननि पाषण्डोच्छेदनपटुः स्वस्वरूपाचलस्थितिः प्रशान्तमूर्तिर्निर्दोषो असुरगुरुवादिमोहन अतिकारुण्यनयन ऊर्ध्ववार्ध्व प्रवर्तकः महाव्रत साधुशीलः साधुविप्रपूजक अहिंसा यज्ञ प्रस्तोत्र साकार ब्रह्म वर्णन स्वामीनारायण स्वामी कालदोष निवारक सत्शास्त्र व्यसन सद्य समाधि स्थितिकारक कृष्णार्चा स्थापन कर कोलद्विज कलितारक प्रकाश रूपो निर्दम्भ सर्वजीवहितावह भक्ति संपोषको वाग्मी चतुर्वर्ग फलप्रद जय सद्गुरु स्वामी प्रभु जय सद्गुरु स्वामी सहजानंद दयाळु सहजानंद दयाळु बळ मारा वंदू कर जोड़ी प्रभु वंदू कर जोड़ी चरणे शीश धराथी चरणे शीश धराथी दुख नाख्या तोड़ी प्रभु जय सद्गुरु स्वामी नारायण नरभ्राता द्विज कुल तनुधारी प्रभु द्विज कुल तनुधारी पामर पतित उधार्या पामर पतित उधार्या अगणित नर नारी प्रभु जय सद्गुरु स्वामी नित्य नित्य नौतम लीला करताय विनाशी प्रभु करताय विनाशी 68 तीरथ चरणे 68 तीरथ चरणे कोटि गया काशी प्रभु जय सद्गुरु स्वामी पुरुषोत्तम प्रगटनु जे दर्शन करश प्रभु जे दर्शन करशे काळ कर्मथी छूटी काळ कर्मथी छूटी कुटुंब सहित तरशे प्रभु जय सद्गुरु स्वामी आयवसर करुणा निधि करुणा बहु कीधि वाले करुणा बहु कीधि मुक्तानंद कहे मुक्ति मुक्तानंद कहे मुक्ति सुगम करी सीधी प्रभु जय सद्गुरु स्वामी जय सद्गुरु स्वामी प्रभु जय सद्गुरु स्वामी सहजानंद दयाळु सहजानंद दयाळु बलवंत बहुनामी प्रभु जय सद्गुरु स्वामी ओमानिकानि च पापानि जन्मान्तरकृतानि च तानि सर्वाणि नश्यन्तु प्रदक्षिणां पदे पदे। बोलो स्वामीनारायण भगवाननी जय, श्री नारायण मुनि देवनी जय। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक करें और शेयर करना मत भूलिए। सब्सक्राइब करें सरदार कथा चैनल को और बेल आइकॉन पर क्लिक करना मत भूलिए लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले पाने के लिए।